Hello everyone, welcome to Dakshana e-classroom program. So in last class we started the Bohr model of hydrogen atom or Bohr model of atom actually. तो अपन ने देखा था कि कैसे बोर ने कुछ assumption माने that जो इलेक्ट्रॉन है that doesn't revolve in any random circular orbit but it revolve around the nucleus only in fixed certain stable orbits is it और उन stable orbit में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है then it does not radiate any radiation or energy that was actually creating problem in Rutherford's model from classical theory of EM waves is it दूसरा उन्होंने माना कि yes इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है only when it is in transition or it is moving or it is jumping from one orbit to another orbit, right? And the third was that जो orbit possible होंगी वो वही orbit possible होंगी stable orbit होंगी जिनमें angular momentum इलेक्ट्रॉन का h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. तो ये तीन assumption मान करके and the fourth one was for the calculation purpose he considered that the electrostatic force by the nucleus on the electron is providing the required centripetal force to the electron to move in circular orbit. तो इन सब का बेसिस को अपन ने यूज करके बोर मॉडल ने then we derived many relation. तो इसमें अपन ने देखा था that speed दूसरी बात मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि एक्चुअली में जो बोर मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एप्लीकेबल है. तो मेनली हम इसकी जो रिलेशन है वो दो के लिए डेराइव करते हैं. वन इज स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन एटम, अनदर इज हाइड्रोजन लाइक एटम. हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब आपको बताए थे कि वो एटम जिनमें ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन है. सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा अब लिथियम लेते हैं तो उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो अब क्या बचेगा Li प्लस. नाउ इट हैज वन इलेक्ट्रॉन ओनली, देन Li प्लस विल बी योर हाइड्रोजन लाइक एटम. सिमिलरली lithium beryllium, so from barium if we are removing two electrons then beryllium 2 positive will be also your another hydrogen like atom. तो इनमें हमने हाइड्रोजन एटम लाइक एटम के लिए रिलेशन कुछ डेराइव किए थे where velocity of electron in any nth orbit is given by its e square by 2 epsilon naught h times z by n और ये हो जाता है also c by 137 times z by n meter per second. Similarly, radius in nth orbit was epsilon naught h square divided by pi m e square times n square by z. That was also equal to 0.529 into n square by z angstrom. Right. Similarly, we derived the expression for energy. So energy here, total energy is equal to minus of, you can write kinetic energy equal to potential energy by 2 and that was coming out to be equal to minus m e power 4 divided by 8 epsilon naught square h square times z square by n square. क्लियर. और इसको हम एनर्जी को और लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस आर सी एच इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आल्सो इक्वल टू माइनस 13.6 टाइम्स जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर. तो ये सब रिलेशन आपको भी याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक काफ़ी यूज़ होते हैं. अदरवाइज यू विल हैव टू डेराइव दीज रिलेशंस एवरी टाइम व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. है. तो अभी अपन ने ये देख लिया था बस कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने ये रिलेशन डेराइव कर लिए थे. यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इट हैज़ सम चार्ज ऑफ ZE, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, और कोई से भी मैं सर्कुलर ऑर्बिट लेता हूँ देन इट्स रेडियस Rn, इट्स स्पीड Vn एंड इट्स एनर्जी n in nth orbit is given by these expressions, right. इनकी हेल्प से पहली बात तो हम इनके लिए और भी रिलेशन डेराइव कर सकते हैं, जिसमें अपने लास्ट एक फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन डेराइव किया था. लेट मी जस्ट सी दैट अगेन. तो उसमें आ जाता है आपका टाइम पीरियड भी.
ओके तो अभी मैं जो रिलेशन डेराइव कर रहा हूँ, एक्चुअली आई एम डेराइविंग दोज ऑल दीज रिलेशंस फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. Then if I want to write all these relations for particularly hydrogen atom, then what I will do, simply for the case of hydrogen atom, your z will be simply equal to 1. तो अगर आप इन सभी relations में z की value simply 1 रख देते, then all these relations will become specifically for hydrogen atom, is it? So let's see. So time period, देखो time period क्या हो जाएगा, time period is equal to 2 pi r is the distance, is it, for nth orbit, divided by speed vn. That will be your time period. We can substitute the value of, so this is 2 pi and rn is equal to what, this is rn. From there we can substitute epsilon naught h square into n square by z divided by vn is e square by, this is a Vn is e square by 2 epsilon naught h into z by n. और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, then we are getting actually time period is equal to this 2, then it will be 4, is it, pi also, pi epsilon naught square h cube divided by this, in numerator it comes actually right, we have 2 pi rn, this epsilon naught h square into, okay, we missed this, pi m e square, so this divided by pi m e square. Then I am substituting and simplifying it, so 2 pi gets cancelled actually here, so this, so finally we are getting, this is a 2 into 2, so it's 4 epsilon naught square into h cube divided by m e power 4 टाइम्स, ये देखो z इंटू z स्क्वायर डिनोमिनेटर में, एंड इट्स n क्यूब बाई z स्क्वायर. तो ये आ जाता है टाइम पीरियड का रिलेशन. इसी को अपन फ्रीक्वेंसी के लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit. So frequency is 1 by time period, and then you will get its m e power 4 divided by 4 epsilon naught square into h cube z square by n cube, right? तो यहाँ पे frequency directly proportional होता है z square by n cube. Time period is, you can write directly proportional to n cube by z square. Clear? Okay, so we got these relations more, so let me write these here. तो अपने पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन आ जाता है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यू कैन राइट m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब टाइम्स z स्क्वायर बाय n क्यूब. ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, योर इलेक्ट्रॉन is revolving in some orbit, circular orbit. It has charge, it has time period, so revolving electron is equivalent to some current. Okay, तो वो equivalent current भी हमें कभी कभी पूछ लिया आता है, and we can derive the expression for that too. So this is frequency, and time period also you can write expression here. Time period is equal to, this is 4 epsilon naught square h cube divided by m e power 4 times n cube by z square. देखो यहाँ पर the equivalent current, is it, of revolving electron can be written as करंट. जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज न्यूक्लियस. So when an electron is revolving in the orbit, some charge is moving, and what is current? Current is charged by time, is it? So we write the equivalent current I is equal to charge divided by time period. Time period we already have, is it? Or you can also write this is E into F. So I is coming out, we just simply multiply this, so this will be m e power 5 divided by
4 epsilon naught square h cube मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो ये आ जाता है आपके पास इक्विवेलेंट करंट। यू कैन राइट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, करेक्ट। सिमिलरली वी कैन राइट मैग्नेटिक मूवमेंट So magnetic moment M is given by I into A, current into area, and this will be equal to I into area is pi r square, correct. So I we already got, let me multiply it with pi r square, then I am getting actually I, you can write m e power 5 divided by 4 epsilon naught square h cube multiplied by z square by n cube। तो ये relation है, actually I will not say that you remember every relation, definitely it's not possible, these are very complex is it and lengthy also। तो हर एक relation हमें बहुत ज़्यादा frequently या बहुत ज़्यादा use नहीं होता है, so that's why no need to remember all the relations, but if you remember these three relations it will be like very good for you actually, because these three relations required a lot, okay, so that's why remainings you can derive if whenever it is required। Okay, so similarly we got the expression for current this, and magnetic moment we write I into A, ये आपको magnetism में पढ़ा होगा is it। So this is I and A, so it's pi into r square, and r is equal to this, so this is coming out to be epsilon naught h divided by pi m e square into n square by z whole square, right। this is, इसको मैं simplify कर लेता हूँ, so then I am getting actually n square everything, that's correct। so this is equal to m e power 5 divided by, this is 4 epsilon naught square h cube multiplied by z square divided by n cube into this pi epsilon naught square h square divided by pi square m square e power 4 into n power 4 divided by z square, clear। let's simplify, so see here z square simply gone, n cube, so it's only one n is left there, and epsilon naught square also gone, pi gone, pi square, so one pi is left here, this is gone, m square, then one m is gone, e power 4, so this is only e is left, so we are left here m equal to, okay, 4 this left is it 1 e, so in numerator we are left with e, and that's all, h cube and h, so we are left with 1 by e by, and m square, so we, and pi is also there, so pi m, and here h square and h cube, and 4 is also there, 4, and this can be written as basically h, anything else left here, we are left with n also multiplied by n, so just let me check it, m we are left with 1 m, e, so e power 5 and 4, we are left with 1 e, pi m and h, okay, so pi here square, so then we are with 1 pi, z square also cancel out, h square, all that gone, so this is our actually magnetic moment। तो magnetic moment को आप e by 4 pi m h is it into n, correct। ये आ जाता है अपने पास, I will check it again, and one more thing actually here, तो linear angular momentum जो होता है, angular momentum we write that as L equal to mvr, and this is equal to nh by 2 pi, clear। तो nh by 2 pi एंगुलर मोमेंटम है, तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या है n, okay, h by 2 pi, oh all right, so let me just check the calculation, we are left here with
I this, is it? So let me just check the calculation. So here we are getting m equal to this, and pi into here r is actually equal to h square. We missed that. So in this case h square, then it will be h power 4, and now here it's h cube, so we will cancel this out and one h will be left there. So finally we will have relation this. So e into here one h will be there, and h by 4 pi m, right? So we are, this is our मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम लिख सकते हैं E बाई, यू कैन राइट 2m E बाई 2m into nh by 2 pi, and actually this quantity is equal to mvr, that is equal to angular momentum. तो इसमें हम ये लिख सकते हैं m is equal to what, E by 2m into L, and this implies magnetic moment divided by angular momentum is equal to E by 2m of electron or for electron in any nth orbit. तो अपने पास equivalent current आ जाता है, equivalent magnetic moment, is it, and relation of magnetic moment with angular momentum. So this is like sometimes these relations are required actually. Similarly we can derive the expression for equivalent magnetic field, is it, for an revolving electron. So magnetic field due to इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r, इज इट. सो वी हैव एवरीथिंग हियर, तो B आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2, I कितना, I इज दिस, दैट इज m e पावर 5 divided by 4 epsilon naught square h cube into z square by n cube, this divided by r, so r will be that, so this is epsilon naught h square r into pi m e square multiplied by, this is n square into z, राइट. तो ये आ गया अपने पास, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो यहाँ पे देखो अपने पास क्या बचेगा, इट्स लाइक एवरीथिंग गेटिंग मल्टीप्लाइड. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, लेट मी जस्ट चेक द कैलकुलेशन, म्यू नॉट दैट्स ओके, 2r, r इज इक्वल टू, दिस इज 1 by r, is it, so 1 by r, तो r की epsilon naught h square into n square, and this will come into numerator pi m e square into z, that's right. And here I is equal to m e power 5 z square by 4 epsilon naught square h cube into n cube. इसको सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा अपने पास पाई, इज इट कैंसिलिंग आउट, नो, सो म्यू नॉट पाई m square e power 5, so it's e power 7 divided by 4 into 2, it's 8 epsilon naught square epsilon naught cube h square, so it's h power 5, and here z cube and n power 5, so this multiplied by z cube divided by n power 5, this is B, and you can write B is directly proportional to z cube divided inversely proportional to n power 5. तो ये अपने पास रिलेशंस हैं फॉर ए इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दैट रिजल्टिंग इन, तो यहाँ पे लेट मी राइट इट, magnetic like current equivalent is equal to m e power 5 divided by 4 epsilon naught square h cube into z square by n cube. Equivalent current m by L, that is equal to simply E by 2m, this relation. Magnetic field B, you can write actually, this is a like quite complex expression, but let me still write it. So it's coming out to be mu naught pi m square e power 7 divided by 8 epsilon naught cube h power 5 multiplied by z cube by n power 5.
So these are all relation for a hydrogen like atom, is it? अभी मैं आपको बताता हूँ पहले ये सभी रिलेशन हाइड्रोजन के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट हियर हाइड्रोजन, इज इट? फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्विवेलेंट टू 1, राइट? So these all relations are for hydrogen like atom. For hydrogen atom it implies Z is equal to 1. तो उस सिचुएशन में देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट्स E स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू H is it multiplied by 1 by n. So you can write this is velocity in nth orbit inversely proportional to n. Radius similarly you can write epsilon naught h square divided by pi m e square into n square. Z will be equal to 1. So radius is directly proportional to n square for hydrogen atom, is it? Similarly तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. क्लियर? सो ऑन एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट आर सी एच इंटू माइनस 1 by n square, or that is equal to minus 13.6 divided by n square in electron volt, right? So on exactly I can write the frequency is equal to what? It's m e power 4 this divided by 4 epsilon naught square h cube into 1 by n cube. तो हाइड्रोजन एटम के लिए सिंपली Z will be equal to 1. And so on time period I and B, so this implies time period को आप लिख सकते हो directly proportional to n cube for hydrogen atom because Z will be equal to 1. I is directly proportional to, you can write Z again it will be equal to 1, so it is 1 by n cube. And B, magnetic field is directly proportional to, you can write 1 by n power 5. तो ये रिलेशन आपको बेसिकली दीज आर फॉर हाइड्रोजन एटम. तो देखो अभी सिंपली अपन ने क्या किया, फ्रॉम बोर मॉडल बाय कंसिडरिंग दोज एजम्पशंस अभी हम एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक एटम में रिवॉल्व कर रहा है, देन वॉट एवर इज आस्क्ड अबाउट दैट इलेक्ट्रॉन वी आर इन पोजिशन टू आंसर दैट. इसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इक्विवेलेंट करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इज इट angular momentum, magnetic momentum, its radius, its velocity, its kinetic energy, its potential energy, its total energy. तो ये सब चीज़ें हमें पता है और इनका मीनिंग भी समझ में आ गया है, कुछ कुछ क्या क्या चीज़ें हैं. अभी थोड़ा और इनको अच्छे से समझते हैं. वन मोर थिंग एक्चुअली हियर आई एम यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फर्स्ट टाइम. So let me just explain you a little bit about so that you should not have any confusion in using that electron volt unit of energy. Okay, so I am erasing all this part. You try to remember at least few relations, is it? At least this and this. ये सब चीज़ आपको अगर नहीं भी याद है, it's okay, you will be able to manage, but must remember these 3 relations at least. So let me first explain you the unit of energy, that is electron volt, because you are seeing it first time. Okay. Okay, so let's try to understand this electron volt. It's actually a unit for energy. और ये जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स वेरी स्मॉल यूनिट. सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट दैट. इसमें एक सिंपल सा केस समझते हैं कि अपने पास ये 2 प्लेट्स हैं एक्चुअली, एंड वी हैव कनेक्टेड बोथ प्लेट्स टू सम बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस EMF इक्वल टू V. इसको अपन ने ग्राउंड कर दिया, मीन्स इस प्लेट का पोटेंशियल 0 कर देते हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V हो जाएगा. नाउ व्हाट विल हैपन, सो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V, राइट. और दूसरी बात, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पोटेंशियल,
क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं कि एक चार्ज, यूनिट चार्ज को 0 से v पोटेंशियल तक या फिर आप किसी रीजन में कुछ फील्ड में लाने के लिए कितना काम करना पड़ता है वो अपन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। वही सेम वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज वी राइट इट एज पोटेंशियल, इज इट। तो वहां से अपने पास रिलेशन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इज द चार्ज मल्टीप्लाइड बाई V। मतलब कि अगर मैं एक चार्ज को, इज इट, इफ Q charge is shifted from 0 potential to V potential, right, then, or I will write its change in potential energy, तो वो आप लिख सकते हो डेल्टा यू, और क्योंकि ये 0 से शिफ्ट हो रहा है तो आप इसको सीधा यू लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई V, बिकॉज यू कैन राइट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सो फाइनली यू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस। तो इनिशियली अगर वो 0 पोटेंशियल पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, एनर्जी क्या है, 0। बाद में V पोटेंशियल पे एक Q चार्ज को, मतलब मैं एक Q चार्ज को यहां से बेसिकली Q चार्ज को इस 0 पोटेंशियल से V पर इधर शिफ्ट करता हूं, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज विल चेंज बाय QV। क्लियर। तो मतलब ये हुआ कि अगर एक आप यूनिट चार्ज को 0 से V पोटेंशियल तक भेजते हैं, देन द एनर्जी विल increase or change, is it, if unit charge or basically 1 coulomb charge is shifted from 0 potential to V volt, so you can write U is equal to Q, that is 1 into volt, तो this is equal to 1 joule, so or you can write basically, अगर मैं वोल्टेज को भी 1 ले लेता हूं, then 1 into 1 that will be equal to basically 1 coulomb when it's like shifted by 1 potential difference, that will be equal to 1 joule energy, is it। और इसको आप लिख सकते हो V joule energy। अब यहाँ पे क्या है, ये चार्ज देखो कितना है, 1 कूलम, एंड 1 कूलम इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वहीं पे अगर मैं 1 कूलम की जगह एक इलेक्ट्रॉन को, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड, इज इट, फ्रॉम 0 to V volt or V potential, then its energy will change by electron, its charge into V। तो यहाँ पे ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, और V वोल्टेज पे शिफ्ट किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली यू कैन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इट, और दैट इज इक्वल टू, तो इसको आप लिख सकते हो 1 पॉइंट, अब मैं इस पे देखो वोल्टेज की भी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, इज इट। सो इफ ये तो हो गई एक इलेक्ट्रॉन, अगर E को V वोल्टेज पे 0 से शिफ्ट किया जा रहा है, देन इट्स एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V। इफ वोल्टेज इज 1, देन यू विल राइट U, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E इंटू दिस इज 1 वोल्ट, and that is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule। तो बेसिकली यू कैन राइट 1.6 into 10⁻⁻19 joule, इसी को आप लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस V इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली, राइट, और आई लेट मी राइट इट इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो दैट यू शुड नॉट हैव, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में EV लिख दूंगा। दिस EV इज डिफरेंट, यहाँ पे एक जनरल V वोल्टेज पे शिफ्ट कर रहे हैं, मैं अगर V वोल्टेज की वैल्यू 1 लिख लेता हूँ, देन इट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और
इसका मतलब रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो मतलब ये बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी की, इसको हम लिखने के लिए सीधा सीधा कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट यूज कर लेते हैं। आई होप दिस शुड बी क्लियर। मतलब सिंपल टर्म्स में इतना जूल एनर्जी है, इस जूल एनर्जी, दिस जूल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो जो कि आपको अभी यहाँ पे एनर्जी के लिए अपन ने यूज किया था। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ विद द बोर मॉडल। This was about your electron volt unit. Okay, so for hydrogen atom, actually I can write simply the relation for energy V, that is equal to m e power 4 divided by 8 epsilon naught square h square into z will be equal to 1 divided by n square, and this energy you can write minus 13.6 divided by n square in electron volt, or E is also equal to minus RCH by n square. It's same thing actually. R is Rydberg constant. अब देखो इसमें हो क्या रहा है, this is nucleus, orbit 1, orbit 2, so 1 2 3 and so on 4. क्लियर? तो अभी देखो जब ऑर्बिट 1 में है तो एनर्जी, इज इट, एनर्जी अपन ने कल भी देखा था इसका, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इज इट, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो अपन देखते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन n is 1, it's minus 3.4 electron volt when n is equal to 2, minus 1.51 electron volt n is equal to 3, minus 0.85 electron volt n is equal to 4, minus 0. This is a 54 electron volt n is equal to 5, minus 0.38 electron volt n is equal to 6, और माइनस 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n इज इक्वल टू 7। तो ये क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स की। अब देखो यहाँ पे यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, एक्चुअली ऑल द एनर्जीज आर इन नेगेटिव। तो ये एनर्जी क्या है, दिस इज द लीस्ट एनर्जी एज वी आर मूविंग। तो यहाँ पे, यहाँ से मतलब ऑर्बिट 1 से 2 में जा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है। 2 से 3 में जा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 3 से 4 में जा रहे हैं, देन अगेन एनर्जी इज इंक्रीजिंग। मतलब इसका क्या होता है कि एक्चुअली इफ एन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, इज इट, देन इट्स एनर्जी विल इंक्रीज। तो अब वो इंक्रीज कैसे होगी, राइट, इट कांट इंक्रीज बाय इटसेल्फ, मीन्स सम एनर्जी नीड टू बी सप्लाइड, इज इट। तो उस केस को अपन बोलते हैं एक्साइटेशन, इज इट। सो you can write excitation। तो excitation क्या हो जाता है, of electron means when electron jump from lower state, or you can write lower energy state to higher state, we will call that as excitation। इलेक्ट्रॉन, और इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, इन दिस केस यू कैन सी द एनर्जी नीड टू बी सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब इस सिचुएशन में तो n इज इक्वल टू 1 है, वी कॉल दिस इज ग्राउंड स्टेट अगर इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में है, or normal excited state। If electron is jumping to n is equal to 2, then we will say this is first excited state।
Similarly, n is equal to 3 second excited state, 4 third excited state, and so on. 5 its fourth एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इनको अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करना है मींस एनर्जी नीड टू बी सप्लाइड. कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी वो इनकी एनर्जी का डिफरेंस इज इट. सो डेल्टा ई इज इट जो सप्लाई करनी है वो क्या हो जाएगा. यू कैन राइट ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर लेट सपोज ये एन इनिशियल है और कोई भी एन फाइनल, मैं जनरल टर्म्स में ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा. दिस ई फाइनल इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन फाइनल स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन इनिशियल होल स्क्वायर. तो इसको मैं रीअरेंज करके ले सकता हूं. जो एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे देखो ये तो प्लस हो जाएगा 13.6 को, तो ये आई कैन राइट दिस इज 13.6 n initial square minus n final square. This is the amount of energy need to be supplied. Point, जब इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर लोअर एनर्जी स्टेट लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी और वो बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है. अभी हम आगे देखेंगे कि ये एनर्जी कैसे कैसे सप्लाई की जा सकती है. तो वो कॉलिजन के द्वारा भी सप्लाई की जा सकती है. जब हाइड्रोजन एटम या एक न्यूक्लियाई और एक हाइड्रोजन एक न्यूट्रॉन या किसी दूसरे एटम से कोलाइड करता है, वी विल सी दैट समटाइम सम फोटोन में बी स्ट्राइकिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन एंड सप्लाइंग द एनर्जी. तो वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं. इनको डिटेल में अभी अपन देखेंगे कि कब कैसा कौन सी पॉसिबिलिटी होगी कि एक्साइटेड कौन सी स्टेट में जाएगा. वी विल सी दैट एक्चुअली. सो दिस इज कॉल्ड योर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. And similarly, vice versa, if electron is jumping from higher energy state to lower energy state, is it? That is called de-excitation state. Let me just tell you that. So in case of de-excitation, electron jump from higher energy state to lower energy state by, अब इसमें क्या हो रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है, तो क्या करेगा, उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, इट रिलीजेस दैट एनर्जी. और कैसे रिलीज करता है, बाय इमिटिंग वन फोटोन. ये अपने जो बोर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट था उसमें यही बताए थे, राइट. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट बाय रेडिएटिंग a photon of energy equal to the difference in energy of higher and lower state. सही ना. ये अपन कल डेराइव भी किए थे. तो यहाँ पे अगर ये मेरा इनिशियली, यहाँ पे इन दिस केस क्या होगा, इनिशियली यू विल राइट एन इनिशियल विल बी हायर देन एन फाइनल. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर इनिशियल स्टेट विल बी हायर देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर फाइनल स्टेट. तो एनर्जी इसमें लिख सकते हैं एन ई इनिशियल विल बी माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन इनिशियल स्क्वायर. और ये एनर्जी क्या होगी, दिस एनर्जी विल बी ग्रेटर देन ई फाइनल दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन फाइनल स्क्वायर. तो यहाँ पर एनर्जी जो लिखेंगे डेल्टा ई, जिसका एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू, यू कैन राइट ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, एंड दिस कम्स आउट टू बी 13.6. this you can write final है, so it's n final square minus n initial square. this will, और ये इसको आप लिख सकते हो h nu, is it? so we can write it actually nu is the frequency. this is comes out to be, मैं इसको rch भी लिख देता हूँ because 13.6 is also equal to rch. then it's equivalent to 1 by n final square minus 1 by n initial square this divided by h. तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है. और वेवलेंथ भी अपन लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई सी, देन वी विल गेट वेवलेंथ. सो 1 बाई लैम्डा वी राइट इट न्यू बार. दिस इज आल्सो कॉल्ड वेव नंबर. दैट विल बी इक्वल टू
this is r h constant and times 1 by n final square minus 1 by n initial square. So these are all relations for excitation and de-excitation. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इट, यहाँ पर अपने बोला था कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था इट फेल्स टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. वी विल सी नेक्स्ट कि इसका ये डी एक्साइटेशन जो नील बोर का मॉडल है वो कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर रहा था. सो बिफोर गोइंग फॉर दैट लेट मी सी सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द थिंग्स फॉर्मूलाज वी हैव जस्ट डेराइव्ड. Okay, so let's see, here we have one problem. It's asking what is the angular momentum of electron in Bohr's hydrogen atom whose energy is this. So first thing is it's talking about hydrogen atom. So hydrogen atom means Z is equal to 1. और ये बात बोल रहे हैं कि like energy is minus 3.4 electron volt. And we know actually energy of hydrogen atom is minus 13.6 divided by n square, and this is actually equal to for this hydrogen atom minus 3.4, right? We can solve it simply. This implies n is equal to 2. तो मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से में n is equal to 2 means first excited state. अब उस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम अपन को पता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. n is equal to what? 2. So this is simply 2h by 2 pi cancelled out, and this is h by pi is the angular momentum. See, this is simple straightforward problem. Okay, let's go see the next problem. So if average lifetime of an excited state of hydrogen atom is of the order of 10 to the power minus 8 second, estimate how many orbits an electron make when it is in the state of n is equal to 2 before it suffer a transition to n is equal to 1. So let me first explain you the question actually. यहाँ पर है कि ये हाइड्रोजन एटम है. अगेन वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम. दिस इज n equal to 1 and this is n is equal to 2. So initially the electron is in actually first excited state that is equal to n is equal to 2. और इसमें ये बोल रहा है कि अब ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में है देन इट stay there for some time, small time, and that time it's mentioning average life of 10 to the power minus 8 second. तो उतने टाइम के लिए वो यहाँ पे स्टे कर रहा है, उतने टाइम. अब इसका टाइम पीरियड अगर इससे क्या हुआ, कम हुआ, तो वो कुछ 2-4 चक्कर इस ऑर्बिट में काटेगा. तो वही आपको पूछा गया है कि कितने राउंड्स ये इसमें बेसिकली लेगा बिफोर जंपिंग टू द n इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास इस ऑर्बिट में स्टे करने का उसका एवरेज टाइम पता है, हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. दैट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय इट्स this time divided by its time period will be the number of rounds it will make in this orbit before jumping to n is equal to 1 state. Clear? तो उसके लिए हमें चाहिए टाइम पीरियड. इज इट? सो टाइम पीरियड of electron in n is equal to 2 state or orbit. तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, t is equal to 2 pi rn divided by vn. क्लियर? और rn nth ऑर्बिट में रेडियस क्या होता है, बेसिकली इट्स यू कैन राइट 0.529 डिवाइडेड इनटू n स्क्वायर, राइट. सो ये हो जाएगा rn सेकेंड इज इक्वल टू बेसिकली 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम. रेडियस आ गया अपने पास. स्पीड अपन को पता है vn इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन राइट आइदर 2.18 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 2 हेयर. तो अपने पास vn भी आ जाता है 2.18 10 to the power 6 divided by 2 meter per second. Clear? So we got v speed, we got radius. Substituting here, then we will get time period. So time period is equal to 2 pi into 4 into 0.529 into 10 to the power minus 10. This divided by this, that is equal to 2.18 into 10 to the power 6, and this 2 will be multiplied up. So this is the time period of revolution of electron. नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड्स इज इट, और
that you can write equal to this 10 raised to power minus 8 divided by time period, and this 10 raised to power minus 8 divided by this. So this comes out to be 4 pi into 4 into 0.529 into 10 raised to power minus 10. I don't know whether it's visible to you here. Okay, so let me solve that here. तो यहाँ पे number of rounds, is it number of basically it's estimate how many orbits. So you can write orbits is actually saying how many times it will orbit actually in that, is it? So I will take that number of rounds, number of, you can say rounds or rotation. So this will be equal to time divided by time period, that is equal to 10 raised to power minus 8 divided by time period is 4 pi into 4 into 0.529 into 10 raised to power minus 10 multiplied by 2.18 into 10 raised to power 6. And solving this we are getting actually that comes out to be 8 into 10 raised to power 6. So this is your answer for this problem. तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें, सीधा एप्लीकेशन है, बट यस यू शुड रिमेंबर दीज रिलेशंस एंड इक्वेशंस, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ओके, सो लेट्स सी मोर एप्लीकेशन. Okay, so see here we have next problem. It's talking about consider the energy level diagram of hydrogen atom. How will the kinetic energy, potential energy vary if the electron move from lower level to higher level? तो ये है न्यूक्लियस. This is n is equal to 1, 2 and 3. तो मतलब एक अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोअर से हायर लेवल पर मूव कर रहा है, then you are supposed to explain here how its kinetic energy and potential energy will vary. No need to like think much about it. We just need to have some direct relation of kinetic energy, potential energy and total energy. पहली बात तो अपन को ये मालूम है total energy E is related to minus of kinetic energy equal to potential energy by 2. And this is equal to what? Minus 13.6 divided by n square, is it electron volt. तो यहाँ से अगर देखे जाए तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या आ जाती है फॉर हाइड्रोजन एटम, इट्स 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? सो दिस इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट. क्लियर? अब इसमें ये बोल रहे हैं कि लाइक हाउ दीज टू क्वांटिटीज विल वेरी इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, राइट? तो यहां पे आप देख सकते हैं लेट्स से वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट थिंग इज काइनेटिक एनर्जी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. यहां पे आप देख सकते हो वी कैन आइदर से काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव एंड काइनेटिक एनर्जी वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. तो यहाँ से क्लियरली सीधा सीधा दिख रहा है कि n की लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घटेगी. क्लियर? सो यू कैन डायरेक्टली राइट हियर काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, इज इट, एज इलेक्ट्रॉन मूव from lower level to higher level. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. बहुत छोटी सी चीज़ है, सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट दीज थिंग्स शुड मेक सेंस टू यू, देन ओनली दीज आर एक्चुअली लाइक समथिंग, इज इट? तभी कुछ इनका मतलब है, कोई मकसद है. अदरवाइज लाइक इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन दीज थिंग्स विल इवन अपीयर वेरी डिफिकल्ट टू यू. सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर इट्स नथिंग एक्चुअली लाइक, इज इट? इफ यू आर रिमेंबरिंग द थिंग्स, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन. तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास सीधा सीधा रिलेशन आ गया. अपन देख सकते हैं n = 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2 के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जैसे जैसे हायर लेवल पर जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है. क्लियर? ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी देखो पहले क्या आ गया? -2 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. फर्स्ट थिंग इज इट्स नेगेटिव, इज इट?
n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13.6 इंटू 2 एंड दैट टू इट्स माइनस एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी n इज इक्वल टू 1 पे क्या है, बहुत कम है। As we are moving for n is equal to 2, then potential energy, so you can write here for n equal to 1, the potential energy you can write it's equal to minus 2 into 13.6, that you can write 27.2 electron volt. Potential energy for n equal to 2, तो ये हो जाएगा potential energy is equal to minus 3.4 into 2 and that comes out to be 6.8 electron volt. Now see here, ये n is equal to 1 के लिए and this is minus, magnitude wise yes you can say it's decreasing, but because it's negative तो ये energy बहुत कम है, ये energy ज़्यादा हो गई. So here you can say the potential energy increases as electron move from lower level to higher level. तो ये आपके समझने के लिए कि हाँ आपको ये समझ में भी आए कि हो क्या रहा है एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी पे कैसे वेरिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे वेरी कर रही है, एंड सो ऑन. सिमिलरली फॉर काइनेटिक एनर्जी. लेट्स सी नेक्स्ट एप्लीकेशन. Okay, so here we have next problem. Suppose potential energy between electron and proton at separation r is given by U equal to k ln r, where k is some constant for such a hypothetical. So it's actually not hydrogen atom, it's an hypothetical hydrogen atom actually, or hydrogen like atom basically. Calculate the radius of nth Bohr orbit and its energy level. Nth Bohr orbit means we यहाँ पे हमें मान के चलना है कि बोर मॉडल एप्लीकेबल है. हाइड्रोजन एटम एक हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम है, तो उसके लिए nth बोर रेडियस क्या होगी और उसके एनर्जी लेवल क्या होंगे वो अपन को कैलकुलेट करना है. क्लियर? तो अब देखो थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें पुरानी वाली यूज़ करनी पड़ेंगी कि यहाँ पे हमें दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी. सो U इज इक्वल टू के ln r. You should remember the force and energy relation. So here force is equal to minus of du by dr. You should remember this relation. तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इज k by r माइनस here basically this force is towards center. अगर यहाँ पे ये एक प्रोटॉन है, this electron at radius r, then force on the electron is towards minus, means it's towards center. So basically this force will provide the required centripetal force to electron. तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास सीधा एक रिलेशन आई, वी कैन राइट mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू k बाई r. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर इज इक्वल टू k एंड दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m. क्लियर? सो ये आ गया अपने पास वेलोसिटी. नेक्स्ट, because it's Bohr model, so means Bohr quantization of angular momentum will be also applicable here. So I can write mvr is equal to what, nh by 2 pi. This should be also valid here. तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, दिस इज nh by 2 pi m into v. Let me substitute the value of v there. So I am getting here, this is nh by 2 pi m and v is, this is under root k by m, so it's actually under root m by k. In solving we are getting r is equal to nh by 2 pi under root mk. So this is the Bohr radius. Clear? Now energy के लिए चाहिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2 और mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से है k, so this you can write k by 2. पोटेंशियल एनर्जी अपने पास ऑलरेडी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू k ln r. r की वैल्यू ये रख देते हैं तो ये आ गया k ln, दिस इज nh
by 2 pi under root mk. क्लियर. सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? तो टोटल एनर्जी अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस इज k बाई 2 प्लस k ln nh बाई 2 पाई अंडर रूट एम के. तो फाइनली एनर्जी का रिलेशन आ जाता है अपने पास k बाई 2, यू कैन दिस टेक 1 प्लस 2 ln nh बाई 2 pi under root mk. So this is the energy level for this hypothetical hydrogen atom. So I think there should not be any confusion. अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाती है जहाँ पे एक इमेजिनरी कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये रिलेशन मालूम होना चाहिए जो आपको 11th क्लास में बेसिकली पढ़ाया जाता है. सो U इज इक्वल टू के एल एन आर. तो यहाँ से अपने पास फोर्स डिफरेंशिएशन करके आ गया. दिस फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. वी गॉट दिस रिलेशन. तो वहां से अपने पास वेलोसिटी आ गया. बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट बोर मॉडल, बोर रेडियस मीन्स वी विल, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि बोर मॉडल एप्लीकेबल है. वी कैन हैव दिस रिलेशन. सब्सटीट्यूट करके रेडियस आ गया, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, add it, you are getting total energy. So this is about basically today's lecture. Let's continue from here onward in the next class. Thank you.